अरे रतनदीप, तू गायब ही हो गया रे। ऑनलाइन के बाद आता ही नहीं क्लास के लिए। कहाँ है? कहाँ पर? अरे बाप रे, तुम कर्नाटका भेज दिया तुमको कंपनी वालों ने। 1 महीना? खाना पीना में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चल ठीक है। भार्गवी। हम्म। अरे तो भेजता हूँ कल रात। अरे मैं रात को था लेकिन लाइट ही चली गई कल यहाँ पर। आज भेजता हूँ। सब रखी है मैंने, टेंशन मत लो। Okay. So let's start with factors. What is the meaning of factor? Suppose if I take a number 12, right? So factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are factors of 12, right? But if I take some number which are, let's say 180. So finding factors of 180 will be difficult, right? Because you cannot go and sit and count all the factors. And even if I take larger number, let's say 216,724, still going to be very large number of factors will be very high, right? So do we have any method by which we can find out the number of factors? See, I'm not interested in what are the factors. I'm more interested in the number of factors. First, like in this case we have 6 factors. So 180 will have how many factors? That we have to understand it, right? So if I give you a particular number and if I ask you how many factors are there in that number, so for that, what we are supposed to do, we are supposed to prime factorize a number. So what is the meaning of prime factorization? So let us assume that n is a composite number. Let's take n is some composite number. So if n is any composite number, we can prime factorize it in this form of a raised to the power p into b raised to the power q into c raised to the power r and so on. Called prime factorization. So when you prime factorize, this a, b, c are prime numbers, right? A, B, C are nothing but they are called prime numbers, 2, 3, 5, 7, right? Because either a number is a prime or it is made up of all prime except one, right? So then to find the total number of factors, we simply take the power p plus 1, q plus 1, r plus 1 and so on. So simply take the power, add 1, q plus 1, r plus 1 and so on. Example 12. Now prime factorization of 12 is 2 square into 3 raised to the power 1. So to find total number of factors, first we prime factorize it, 2 and 3 should be prime. Then to find total number of factors, I take this 2 and add 1 to it. I take 1 and add 1 to it. So 2 plus 1, 3, which is equal to what? 6. So 6 is nothing but the total number of factors in this case, right? Even if you have to find, okay. देख 12 is 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. Understood? Right? Similarly, if you have a number, let's say 180. First you prime factorize 180. Prime factorize 180, it will give you 2 square into 3 square into 5 raised to the power 1. And to find total number of factors, what we are supposed to do, take 2 plus 1, take again 2 plus 1 and take 1 plus 1. So 2 plus 1 is 3,
into 3 into 2. How much it is? 18. So how many factors 180 will have? 18 factors, right? 180 will have 18 factors. One 80 will have 18 factors. We can find out the number of factors by prime factorizing a wave number, right? So prime factorize, there might be some number which difficult to prime factorize because made up of all prime. For example, 111, not 111. 385. Although this is an easy number, you can write this as 5 into 7 into 11. Right? But sometimes you have numbers which are made up of large primes, right? So for that you should know divisibility. Here it is very easy, right? But sometimes you have a number which is only made up of all primes. So for that you need to know the divisibility. We'll come to that number when we solve some problem. Here number of factors again will be equal to how much? All these numbers has power what? 1. The number of factors will be what? 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, which is equal to 2 into 2 into 2, 8, right? Okay. Now, writing some number, and you have to tell me what observation you can make it from. Tell you some number. Let's look at 4. So 4 has how many factors? 1, 2 and 4. 12 we have already discussed. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 20, 1, 2, 4, 5, 10 and 20. 16, 1, 2, 4, 8 and 16. And let's take 36 also. What are the factors of 36? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36, right? Now 4 has how many factors? 3. 12 has how many factors? 6. 20 also has 6. 16 has how many factors? 5. And 36 has how many factors? 9, right? Can you make some observation for this, this and this and for these two? As far as the number of factors are concerned, right? Can you make observation? 12 and 20 has 6 and 6 factors, right? 12 and 12 has 6 and 6 factors. While you look at all these numbers, right, has 3, 5 and 9 factors. So if I ask you to make some observation, first of all, what type of number these are? 3 are? 4, 16 and 36. What type of number? Perfect square. Very good. Perfect square, right? These are perfect square. Are these two perfect square? No. So understand, if there is a number which is a perfect square, it will always have an odd number of factors. A perfect square will always have an odd number of factors. Question is why? Vaishnavi, why you did not come today? NPTL ना? अरे वो तो बगल में ही था. अच्छा. So a perfect square will always have an odd number of factors. Question is why? Question is why a perfect square will have an odd number of factors.
How you identify a number is a perfect square or not? In prime factorization, what are the things we look to check whether number is a perfect square or not? When you prime factorize a number, if I give you a number in the prime factorization form, how you will come to know whether number is a perfect square or not? And understand this, right? Suppose n is some number, right? When you prime factorize into c raised to the power r, right? When you prime factorize any composite number, this is how you prime factorize, right? Now, a perfect square is determined when it can make a pair, right? What he said is that makes a pair, right? When you can make a pair. So if I give you a number, let's say 2 cube into 3 square, right? And if I ask you whether this is a perfect square, answer is no. Why? Because I can make, right? Suppose if I assume that this number is a perfect square, so everything should come out. There should be nothing inside the root, right? So one pair of 2, one pair of 3. After that, you're left with what? 2, right? Inside the root. Not a perfect square. But if there was no 2, because this 2 was not there, that means number would have been, if number is 2 square into 3 square, number is a perfect square or not, right? So if I give you a number, let's say 3 raised to the power 8 into 5 raised to the power 10, and if I ask you whether this number is a perfect square or not, so answer is yes, this number is a perfect square because I can make a pair of 3 and 5. 2, 2, 2, 2 took a pair, right? It simply means that power is an even number. Number is a perfect square. When you take any number raised to an even power, number will become a perfect square. Yes? Okay. So, in this case, if P, Q, R are even, if all are even, right, then N is a perfect square. Then your number N will be a perfect square, right? If this N is a perfect square, then you find the total number of factors. So how to find out total number of factors formula? How to find total number of factors? To find out total number of factors, I give you the formula. Take the power plus 1. Now, since this P is what? Even. So I'll take even plus 1. Second bracket is again even plus 1 and so on, right? So what is even plus 1? Odd. Again even plus 1. Odd. Every time you multiply even plus 1 is odd. So odd into odd will give you what? So if there is any number which has odd number of factors, you can clearly say that number is a perfect square because it has an odd number of factors. Right? Part is clear? Okay. All of you know what coprime numbers are? Coprime, relative prime. Yeah, 3 and 5 are prime. So any two consecutive numbers are coprime, first of all. 1, 2, 2, 3, 3, 4, right? Also, 9 and 16 are coprime. Why? Because you cannot have any other number apart from 1 which can divide both the numbers. So it simply means if you cannot divide any two numbers, when you write that number in the form of P by Q, and you cannot divide that number, numbers are coprime, also called relative prime. Right? 6 and 10 are not coprime because you can divide them with what? 2. If I say 8 and 27 are coprime because 27 is simply made up of 3 and 8 is made up of only 2 are coprime, right? So coprime is clear. Okay. Next is, this part is clear to all of you? The total number of factors formula is clear. Now, second thing. Suppose I have a number, let's say 18, right? Suppose I have a number, let's say 18. Factors of 18 are 1, 2, 3,
6, 9 and 18. And if I ask you in how many ways we can write 18, now I'm not giving you, suppose factors are not given. I'm simply asking you that in how many ways you can write 18 as a product of two different factors. Factors are also called divisors. Suppose if I do not know the factors, right, I'll simply give you a question that in how many ways you can write 18 as a product of two factors. So 18 you can write as 1 and 18, yes, 1 into 18. You can also write 2 into 9 and you can also write 3 into 6. Different factors means all factors has to be different, right? So in how many ways we can write? 3 ways. What are the total number of factors here? 6. Half of that is 3 because you can make a pair, right? 1 and 18, 2 and 9 and 3 and 6. Clear? Suppose if I have 36 and if I ask you in how many ways you can write 36 as a product of two different factors. So if I, because 1 is a factor of all the numbers, right? 1 and 36, 2 and 18, 3 and 12 and 4 and 9. So my question is product of two different factors. But if I remove that different wala thing, then I can write this also 6 into 6. So 6 is a factor, 6 into 6, 36, right? So if I say two different factors, so there are 4 ways. And if I say simply factors, there are 5 ways. 6 into 6 also taken into consideration, right? Of course, every time you cannot go and make the pair. So you have to remember the formula to find out the number of ways in which you can write a composite or any number as a product of two factors, right? So I'll take this off. This part is clear to all of you, Vaishnavi and Ratandeep. को बोलो ऑनलाइन तो ज्वाइन करे. एनपीटीएल का ऐसा भारी एग्जाम था कि तुम लोग ट्रेन आउट हो गए. और नेगेटिव मार्किंग, जय माता दी भी काम करता है. नंबर ऑफ वेज of writing a number. This is number of ways writing a number as a product of two different factors, right? So there will be two cases in this case. First case is when number is not a perfect square. So when number is not a perfect square and you have to write down, find out the number of ways in which you can write a number as a product of two factors, it is simply half of total number of factors. Half of total number of factors. That means you take any number, find out the factors by using total number of factors formula and take half of that, right? If number is a perfect square, right? If number is a perfect square and then you have to write that number as a product of two different factors. Understand? Different is mentioned or not, that's very important when number is a perfect square. Second case is when number is a perfect square. Then the number of ways is nothing but half of total number of factors minus 1, then divide by 2. First you find out total number of factors. For a perfect square, total number of factors will be odd. Odd minus 1, even, and then divide by 2. Right? And if I simply say
total number of factors in which you can, total number of ways in which you can write a perfect square as a product of two factors, not different. Then whatever total number of factors you'll get, add one more case. Or simply in this case, plus 1 divided by 2. Or simply you find out this and then add one more to it. Right? Both ways you can do it. Sorry? नहीं, not plus 1. इसको एक ही याद रखो. Total number of factors minus 1 divided by 2 will give you number of ways in which you can write a perfect square as a product of two different factors. If they say that product of two factors, you go by this same thing, and in the end, whatever number of factors you are getting, add one to it. Right? एक extra case आएगा ना, 6, 6, 36. Right? This is clear? Okay. We'll take up one CAT का question. आज मैं तुमको CAT का question. Last 2023 का, I'll do one question. हाँ, CAT में the CAT will give you questions normally. Either prime factorization is already done, and then they will ask you some difficult question based on that. Difficult means like you have to think, and whatever your answer will get at first attempt, mostly your answer will be there in the option, and then in the end you see कि अरे ये तो answer है ही नहीं, कुछ cases छोड़ दिए, right? So we'll do one question. That's why I took this. This is clear? Okay. Now again, if you look at this number 36 and 12, let's write two numbers, right? Let's take 36 and 12. Factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12, right? So if you look at all these factors, in these factors there are some factors which are perfect square. Which are the numbers which are perfect square here? 1 is 1. 1 is always a perfect square. 4, 9 and how many perfect square you'll find out here? 4. How many perfect square do we have here? One is 1 and second is 4. Let's take 20 also, right? Not 20. Let's take 42. Factors of 42 is 1, 2, 3. Then, see, first your prime factorize 42. Suppose you have difficulty in finding factors, right? You 42, you prime factorize it. 2 into, then 3 into 7. That means whatever your factors you are making should be made by all these digits, right? So 2, 3, 7 will be one of the factors. Then with 2 and 3 we can make 6. Then after 6, 7 will be a factor. Next number you can make is what? With 7 with 2. 7 2s are, 7 3s are. And last is 42. 8 factors are there, right? Out of these 8 factors, how many are perfect square? Only 1. So if we have a large number, right? Let's say we have a number 3 raised to the power 8 into 2 raised to the power 10 into 5 raised to the power 12 or some number large, 12, 13, whatever. Then I ask you that when you write, this is a large number, right? How many perfect squares, how many factors are there which are perfect square? Of course, you're not going to go and write all these numbers, right? So understand how perfect squares are defined first. Right? So I told you perfect squares are defined when you raise a number to an even power, right? So let us understand something from 36 only and 12. So look at this. What is prime factorization of 36? 2 square into 3 square, right? At what power you get perfect square? At 2 raised to the power 0. 2 raised to the power 0 is what? 1. 1 is a perfect square. Then another perfect square you will get at what? 2 square. How many perfect square you are getting here? 2.
Write 2 here, right? 1 is here, 1 is here. Then what power of 3 you will get perfect square? 3 raised power 0 and 3 raised power 2. How many perfect square are you getting here? What sign we have? 2 2s are. So in 36, how many perfect square you will have? 4. So same thing should work for 12 also. So prime factorize 12. 2 square into 3 raised power 1. What power you will get perfect square? Right? And here you will get perfect square at 3 raised power 0 only, which is 1. 2 ones are, you get 2 perfect square. In 42, you have 2 raised power 1, 3 raised power 1, 7 raised power 1. Where you will get perfect square? At 2 raised power 0, 1 here. Then at 3 raised power 0, 1 here. And at 7 raised power 0, 1 here. 1 into 1 into 1 is, that's why you're getting 1 perfect square, right? Understood this? अब आते हैं बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है लार्ज पावर के, नोट कर लो. Okay. So understand, you have to do prime factorization. Prime factorization you have to do. Let's take some large numbers, right? Let's say if you have 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 8. And if you want to find out perfect squares. Here, perfect square you'll get at 2 raised to the power 0, then 2 square, then 2, 4, and then 2, 6. How many perfect square here? 4 here, right? Where you will get perfect square? 3 raised power 0, 3 square, 4, 6, and 8. How many perfect square here? 5. 4 5s are. So how many factors are there which will be perfect square? 20 or not? It will be 20 perfect square, right? Still, powers are still small, right? Can do it. Let's say if we have, let's say 2 raised to the power 51 into 3 raised to the power 72 into 5 raised to the power 91. Are you going to go and sit? No, right? You just have to find out what are the even powers which are there, right? From 2 raised power 0 to 2 raised power 51, how many powers, how many places you will have even powers. So for that you remember it, right? We got here 5, right? What you are supposed to do, whenever your power is even, you divide by 2 and add 1 to it. So 8 divided by 2 is what? 4. 4 plus 1. See? And when your power is odd, again do the same thing. Add 1 and divide by 2. 7 plus 1. 8 divided by 2. So simply, whether it is odd power or even power, if you have to find out even powers, include 0 also, you simply have to add plus 1 and divide by 2. 51 plus 1, 52 divided by 2, 26 perfect square here. This is even, right? So first even divided by 2, 36 plus 1, again odd we have to plus 1 divided by 2, so 91 plus 1,
divide by 2. This many perfect squares will be there. That is how you find out, right? Yeah, again, you don't have to do it because when you either this question will be theta, so multiply it, or else look at the last digit. The last digit is what? 6 6 are 36 into 7, 42. Look at your option which is ending with 2. हाँ, वो उससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं. कैट के क्वेश्चन में ऐसा आता है कि लास्ट डिजिट सारे अलग अलग रहेंगे तो एक से आंसर निकलता है. वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन आई थिंक मतलब नंबर सिस्टम. If you have two options which are 2, then still you can eliminate two options. You have to work with one option. अभी कुछ भेजा ही नहीं, तो मैं मन से करके बता रहा हूँ, भेजता हूँ. वन आई हैव सेंट यू नंबर सिस्टम, कल एक भेजा था मैंने पीडीएफ तुमको 77 पेजेस का. वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. सपोज हाँ, तुम आई नहीं क्लास के लिए. हार्ड कॉपी अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा आज वाले. अभी पहले कंसेप्ट समझा के फिर भेजता हूँ. आज के लिए अभी भेजता हूँ. पहले कैट के कुछ क्वेश्चन करने हैं which appeared in last 2 years from number system and then more questions on this. Right? Next is sum of factors. Now NMAT, symbiosis, these are the exams where they will simply ask you a direct question. Like SIMB, SIBM, last year they have asked a simple question, like a number was given, then they ask you find out the sum of factors. The powers were large, right? Like how we have this number. So first understand how to find out sum of factors. What is the meaning of sum of factors? If I take, let's say 20, so factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. So if I have to add up all the factors of 20, that is sum, right? So in this case, the sum will be 20 plus 10, 30, 40, 42, right? 42 is sum of the factors. So if I have large numbers, again I cannot go and write the factors and then find their sum. So how to find out sum of factors? So for that, there's one formula which we have to remember. I'll take it off. Sum of factors, right? So when you prime factorize a number, when you prime factorize a composite number, this is how you write, right? So to find sum of factors, first you have to prime factorize a number. Then you write a raised to the power p plus 1 whole minus 1 bracket, b raised to the power q plus 1 whole minus 1 and so on. That means whatever is your power, in power you add 1 and then whole minus 1. So a raised to, suppose this is 2 square. You have to write 2 raised to the 2 square means 2 raised to power 2. So add 1 to in the power. So 2 cube minus 1. Right? And so on, divided by a minus 1 into b minus 1 and so on. Right? Now, suppose 20. So what is the prime factorization of 20? 2 square into 5 raised to the power 1. So to find sum of factors, you take this a, which is 2 raised to the power 2 plus 1 whole minus 1 into b. B is what? 5 raised to the power 1 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1, 5 minus 1. बैकग्राउंड क्यों सुना रहे हो घर का? 2 cube is
8 minus 1, 7. 5 square minus 1 divided by 2 minus 1, 1. 5 minus 1, 4 6 are 6 7 are. Get the answer. Right? That is how you find the sum of factors. Sum of factors whenever they ask you. Sum of factors, product of factors is clear, right? You tried that logical reasoning further? Got that plain wala question? No? So we'll do that also today. T वाला भी सिखाता हूँ. तुमने वो कर लिया, तुम्हारा एक गोवा का जीपीएससी एग्जाम ऐसे नहीं, वो भी भर देना जीपीएससी. डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो घर वाले तुम्हारे खुश होंगे, तू भी निकल जाए. एलडीसी मत भर देना, लोअर डिवीजन क्लर्क. हाँ सेम सेम. कैट तो टफ है यार. क्वालिटी मतलब रहती है तो कैट का पूरा क्वेश्चन उठा के डालते हैं लॉजिकल रीजनिंग में. मैथ्स नहीं आता उसमें, मैथ्स कम आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन. Here to allow other students who are online. Yes, sir. Okay. Of factors, product of factors, number of factors, perfect square. Now, there was this question in CAT 2023. I'll just write down the question for you guys. (2023) का slot 2 में आया था. Slot 1 में भी there was one question, but slot 2 वाला slightly complex. So the question is the number of positive integer less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself. Eta. First, let us try to understand the meaning of this. So, all the positive integer less than 50 having exactly two distinct vectors other than 1 and itself. So, I cannot take prime. Why? If I take prime, so prime has 1 and 5. Right? I don't need this because other than 1 and number itself, I have to take other number. Now, let's take 6. 6 has factors 1, 2, 3 and 6. I can take this, right? Remove this and this. I have to take this.
Clear? That means I have to take a number which has only 4 factors. So in 4 factors, one is 1, second is number itself, the other 2 will have to take it, right? So all the numbers from less than 1 to 50 I have to take, which has how many factors? 4 factors. That means the number which we have will be of this form, right? A raised to the power, how much? 1 into b raised to the power 1 form, first of all, because this will have how many factors? 4 factors or not? Out of 4 I have to remove 2. Or any other form of number we can have, or n can be of which form? Sorry? So we have 2 factors. Acha, 2 distinct factors. Other than 1 itself, only 2 distinct factors I need. So if I take 12, so 12 has what? 1 and 12, definitely these two are there. Apart from this, we should have only 2 factors, not more than 2. 2 distinct factors. That's what the question is saying, right? Now tell me one thing. Second number, there is one more number. Think about it, which also has 4 factors. See, number of factors तुम कैसे निकालते हो? P plus 1, right? If P is 1, so 1 plus 1, right? And then another Q plus 1 is 1 plus 1. So then if I have P plus 1 and then I have Q plus 1. So again, number of factors in this case will be 2 to 4, right? There is another one more case where if P is some power, add 1 to it, there is some number here, should give you 4 factors. What number do you think should come here? 3. That means this P can also be 3 or not. For example, if you look at 2 cube, 2 cube will have how many factors? 4 factors, 3 plus 1, right? Which are those factors? 1, 2, 4 and 8. Apart from 1 in itself, still have 2 factors or not? So either number should be of this form or number should be of a raised to power 3 or a raised to power 5, right? 5, not 5, a cube, only a cube. 5 will have 5 plus 1, 6 factors, right? Or of this form. Clear? Okay. What are the possible numbers from less than 1 to less than 50, from 1 to 50, which you can write as a product of 2 prime numbers? First you can have 2 into 3. एक number हो गया, yes? Second number into 5, very good. Third number 2 into 7. Fourth number 2 into 11. Fifth number 2 into 13. Sixth number 2 into 17. Next number 2 into 19. Next number 2 into, can you take 27? 2 into 27, sorry, 2 into 23 के बाद क्या आता है? 29. Cannot take 29. 2 into 29 is what? More than 50. I have to less than 50. So I made all the numbers which 2 can make with the other prime number, right? Then 3 is also prime number, and 3 can make one number with what? 5. 3 can make one number with 7. 3 can make one number with 11. 3 and 13 also, 39. Can we take 3 into 17? 17 3s are 51. Then 5 can also make prime with what? Sorry, 5 can also multiply with 7. It will give you 4 factors. Can we take 5 with 11? No, I cannot take 5 with 11. 5 with 7 only. Then next number is what? 7 multiplied with what? अरे वो तो हो गया, 7 3 हो गया कहीं पे. 7 should be multiplied with the next prime. So 7 into 11, 77, more than 50. So count this. So 13 are definitely there. I told you what number can also be of what form? 2 cube. So 2 cube has 4 factors. One is 1, one is number itself, and the other 2 numbers.
So 2 cube is one more number, 14. Next, can we take 3 cube? 3 cube will also have 4 factors, right? Out of 4, 1 is 1. Second is number itself. Other 2 factors. 2 factors will have distinct factors. So one more number. After next prime is what? 5. And 5 cube. Can we take 5 cube? Why? Because 5 cube is more than 50, right? So how many numbers? See, this we don't think. The rest, everything you can still do it. The other will not be able to think. So problem क्या होता है? You will mark 13 as your answer. ये जब भूल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है. Sorry? Yeah, all prime. When you multiply only 2 prime, then only it will have 4 factors. Take any other number, it will have more than 2 factors. Multiply 1 prime with second prime and both will raise to the power 1. Or you take 2 cube or you take 3 cube. You cannot take 5 cube because number should be less than 50. Okay. So you go to the worksheet which I gave you yesterday, sent it in the group. Okay. Hello. Let me take some question from number system. From page number 2. Find the number of factors. Question number 20. See, in question number 20, you have to find the number of factors. Number is 3 raised to the power 8 into 6 raised to the power 4. Which option do you think should be your answer? Which option is the answer? Total number of factors. No, number of factors. 45. Are you sure? Answer is 45. Okay. Understand when I say total number of factors, whenever you have to find out, first of all, this and this has to be prime. Is 6 a prime? Look at 45 is there in the option. This is where we do mistake, right? Prime, this has to be prime. Is 6 a prime? No, so you have to make it prime. So 3 raised to the power 8,
3 raised power 4 into 2 raised power 4. 6 raised power 4 can be written as 3 raised power 4. So now this is 3 raised to the power 12 into 2 raised power 4. Now find out the number of factors. 65. आओ ना बह जाते हो तुम लोग. This 6 can be written as मैथ्स में 6 को कैसे ब्रेक करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम. 2 into 3. अब पावर 4 है तो इसकी पावर 4. Then you can write this as 2 raised power 4 into 3 raised power 4, right? Already we have 3 raised to the power 8, which is prime. And now this 6 raised power 4, I can write as 3 raised to the power 4 into 2 raised power 4. When base is same, powers are added. Find out the number of factors in this. Understood? Next question is question number 22. Based on factors only. Question number 22. Find the number of ways in which you can write 5 raised to the power 8 into 7 raised to the power 10 as a product of two different factors. एक मिनट.
ज्ञान दे रहा था मैं इन लोगों को। तो भैया जो भी है, सॉरी सॉरी, हम लोग हमारे वहाँ अभी भी है ना कि बच्चे को लगता है कि कुछ पूछना है तो फोन करेगा कि भैया ये करने का सोच रहा हूँ, आप बताओ कैसा रहेगा। अभी तो मैं करियर काउंसलिंग में आ गया हूँ तो पूछ लेते हैं लोग। नॉर्मली वहां पूछता है, एक लड़का मेरे को 1 महीने से फोन कर रहा है कि सर मुझे ना वो लॉ करना है, आप बताइए। तो उसको 10 बार बता चुका हूँ लॉ की कॉलेज, खुद रिसर्च करेगा, कहता सर लेकिन इस कॉलेज का है ना इतना 70% प्लेसमेंट है, तो मुझे जाना है कॉर्पोरेट लॉ में, तो ऐसा कर कि मैं उसके लिए मेहनत करके एनमैट एनमैट लिखा, क्राइस लिखा, तो देख रहा है कि अगर एनमैट में हो गया तो चला जाएगा। खुद ही रिसर्च कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि लोग पूछते हैं, लोग करते हैं, लोग बताते हैं। यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है। तुम लोग, मुझे किसी ने पूछा तुम्हारे आसपास से किसी क्या करना चाहिए? नहीं। बड़ी प्रॉब्लम ही है, सुधरेगा ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे ये एआई वाला है, पेरेंट्स को पूछना चाहिए था। किसी से पूछते हैं कि भाई है क्या, कोर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्या कोर्स जितना ज्ञान उन्होंने डाल दिया है अपने रोज रोज डाल रहे हैं कि आप एआई का कोर्स, एआई इमर्सिव आप करवा लीजिए। आप आईएम का फैकल्टी लेके आएंगे, आईआईटी के फैकल्टी लेके आएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी ये पूछना चाहिए कि डू नॉट बिलीव इन व्हाट इज देयर। तो हम लोग क्या होता है उस पर बिलीव कर लेते हैं जो आदमी कह रहा है, हम लोग पूछते ही नहीं। अगर कम से कम पूछते तो मैं उनको बता सकता था कि इसमें पैसा मत डालिए। अगर उसके पास मैथ्स नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। अब आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, आपको मैथ्स है आप सीख लोगे। अगर आप मैथ्स नहीं आप नहीं सीख पाओगे, फैक्ट है। अभी मैं तुमको कुछ बताना, स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डालो, तुम गूगल पे डालना, चेक करना, उनका रिक्वायरमेंट देखना। उन्होंने कहा सिर्फ मैथ्स चाहिए। आईआईटीज भी, अब ये आईआईटीज भी पूरा जो नया डेटा साइंस ला रहा है। तुमने देखा 2 साल पहले एक न्यूज आया था कि फॉर इंजीनियरिंग यू डोंट नीड साइंस, ऐसे करके धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्टेटमेंट दिया। मीडिया ने क्या किया, उतने क्लिप को काट दिया, फिर लिखा बट यू नीड मैथ्स, तो वो वाला उसने हटा दिया मीडिया ने। अब वो क्लिप सब जगह चल गया। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर था ये। हाँ, तो उसने भाई साहब ने ये क्लिप डाल दिया, लेकिन आपको मैथ्स चाहिए। आप भले फिजिक्स केमिस्ट्री, अब इतने क्लिप पे दुनिया पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, गाली पे गाली, बेचारा बैठा बैठा हिचकी आ रही होगी उसको, कितनी गाली दे रहे हैं ये लोग बैठे बैठे। एक कब से मरा गया होगा, एक कब से ही मर गया होगा। तो लोगों उसको समझना नहीं है। लोग अभी अभी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में अगर अनलेस यू वांट टू गेट इनटू समथिंग रिलेटेड टू वेयर फिजिक्स इज इन्वॉल्व, एस्ट्रोफिजिक्स बनना है या प्योर फिजिक्स आपको जहाँ चाहिए, जो इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट है उसके लिए फिजिक्स चाहिए। लेकिन डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा साइंस रही है, आपको नहीं चाहिए। आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको बायो और मैथ्स चाहिए, यू डोंट रिक्वायर फिजिक्स। थोड़ा बहुत फिजिक्स चाहिए, लेकिन वो काम कोई और कर सकता है आपका। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाला उसमें मेनली आपको बायो से बहुत सारा फैक्टर आता है बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और समय के साथ सब चेंज हो रहा है। हम लोग नहीं हो रहे। हम लोग क्या अभी भी वो लगे हैं कि आज भी आप साइंस ले लो क्योंकि बच्चा हमारा साइंस में अच्छा करने वाला। साइंस नहीं लेगा तो दुनिया उसको ऐसे नीची नजरों से देखेगी कि ये तो बर्बाद है सोसाइटी के लिए, कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है। तो वो एक चीज दिमाग से कब जाएगी समझ नहीं आता। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कॉमर्स वाले कमाते हैं। लेकिन साइंस में अभी अभी इसका फ्लिप साइड बताता हूँ। कभी जाना आईवी लीग देखना, कभी गूगल में अप्लाई करना, कभी एप्पल में अप्लाई करना। जब इन कंपनीज में अप्लाई करोगे तो इनका एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है। कैट में भी, पहले आईएम में भी वही था कि अगर आपका 80% नहीं है, कंसिस्टेंटली आपने इंप्रूव नहीं किया है, तो निकाल देंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अब तुमने लाया 10th में 90, जोश में, बिल्कुल जोश में जाके तुमने उठा के साइंस ले लिया। तुमको समझ आया, फिजिक्स नहीं समझ आ रही, सर के ऊपर से जा रही है, बहुत सारे लोग साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। केमिस्ट्री भी नहीं समझ आ रही, मतलब 2-3 सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। साइंस तुमने इसीलिए लिया क्योंकि 92 93 आ गया था। फिर क्या होगा, तुम्हारा 12th में परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होगा, तुम जो टॉप की टेक कंपनीज है उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आप वहां भी नहीं सुधरे तो इंजीनियरिंग कर लोगे तो और बुरी हालत हो जाएगी, जो होती आ रही है सबकी। फिर क्या होगा, फिर आप बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज में तो गए, फिर तो लेगी नहीं वो।
वो तो कहेगी भाई इसका तो इसको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। होता है ऐसा, बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते। कभी लिंक्डइन पे जाना और देखना कि एप्लीकेशन को सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का क्या है। अभी भी वो बोलते हैं स्किल्स होना चाहिए, लेकिन देखो स्किल उसी के पास होगी जो जो बंदे में काबिलियत होगी, राइट। और जो काबिलियत वाला बंदा होगा वो सोच समझ के ही साइंस लिया होगा या कॉमर्स लिया होगा या आर्ट्स लिया होगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें नहीं है तुम उसमें स्किल डेवलप कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम मुझसे कहोगे कि भाई डांस करो, डांस में बड़ा अच्छा है, ये है पैसा वैसा सब, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं आता, समझ भी नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता। 1 करोड़ भी दे दो, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोलोगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। 1 करोड़ भी दे दो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो आप चीज कर ही नहीं पाओगे। तुम घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछना कि आप जो कर रहे हो उसमें खुश हो। तुमको दिखाने के लिए शुरू में बोल देंगे हाँ बहुत खुश है, but deep down you also know that most of the parents are not happy with what they are doing it, because they have not chosen things according to their strength। they have वो rat race में फंस गए। वो चीज कब खत्म होगी वो उसके लिए तुम लोग कर सकते हो। मैं तो अपने लेवल पे कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाए, कल तो मैंने बहुत बुरा वीडियो बनाया स्कूल को लेके, अच्छी बजाई मैंने स्कूल की गोवा की। कहा है कि स्कूल वाले सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं, मैं उसको अपलोड करूंगा। नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो मार्केटिंग। तो मैंने तो बोल दिया कि सिलेबस खत्म करना है, तो बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। 26 लाख बच्चा नीट लिखता है, 1,12,000 डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो बाकी का क्या होता है? आधे कुछ डेंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ नर्स बन जाएंगी, फिर बाकी बेचारा बीएससी कर रहा है। बीएससी करने के बाद यूजीसी नेट लिखेगा, बीएड करेगा, स्कूल में टीचर बन जाएगा। तो आपका पहला चॉइस तो टीचर कभी था ही नहीं, आपका पहला था डॉक्टर, आप बन नहीं पाए। अब कैन यू डू जस्टिफिकेशन विथ व्हाट यू आर डूइंग? टीचर बन के अब जस्टिफिकेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो फिर ये टीचर बनेंगे किसको पढ़ाएंगे आगे वाली जनरेशन को? टीचर का मन ही नहीं है पढ़ाने का, टीचर को खुद बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, टीचर उस तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा इंटरेस्ट लेके। क्या होगा? वो जो तुमको पढ़ाएगा वही तुम सीखोगे बच्चे को, वही बच्चा बड़ा होगा, उसको मैथ्स में आप इंटरेस्ट दिला ही नहीं पाओगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट उसका आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो फिर हम वही चीज वापस वापस जनरेट कर रहे हैं। तो तुम चाइना का, हॉलैंड का, फिनलैंड का, कनाडा का, इन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को एक बार जाके देखो। हॉलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखो, तुम फिनलैंड का देखो, कभी भी जाके उठा के दे, उनके वहां टीचर वही बनता है जो इंटरेस्ट होता है जिसका। ऐसा कोई एरा गहरा नहीं बन जाता कि टीचर बनना है मेरे को। इंडिया में क्या होता है तुम खुद खुद मालूम है, राइट। अगर घर में फीमेल का जॉब नहीं है तो क्या कहते हैं? बीएड कर लो टीचर बन जाना, यही होता है। यू अंडरस्टैंड ये एक गलत चीज है कि नहीं है? will they able to justify with what they are doing it? Not, because they never became something which by choice, तो चॉइस था ही नहीं कभी। तो हम लोग वही 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 चीज रिपीट करते जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी तुम्हारे से ही होगा ना, कि उसको भी नहीं इंटरेस्ट आया, उसने भी वही चीजें करी, तो वो साइकिल है ना, विशेष साइकिल स्टॉप ही नहीं होगा। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है हाउ द किड्स आर डूइंग। चाइना ने 6 स्टैंडर्ड से एआई सिखाना चालू कर दिया। हमारे यहाँ आज भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना खा के, टीवी देखे खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। छोटे बच्चे तो खाने ही नहीं खाते आजकल। जब तक कार्टून नहीं लगा तब तक खाएगा ही नहीं, बच्चा रोता रहेगा, सर पटके। तो ये प्रॉब्लम है। जो स्कूल में टीचर भी हैं, तुम खुद बताओ, तब तुमको मैथ्स पढ़ाया गया, कभी तुमको मैथ्स में ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया गया? नहीं। तुमने कभी गलत तरीके से, दूसरे तरीके से आंसर निकाला, क्या तुमको मार्क्स मिले? डिड दे एवर गिव यू मार्क्स जस्ट बिकॉज यू फाइंड आउट सम मेथड ऑन योर ओन? नहीं। तो क्रिएटिविटी सप्रेस हो गई आपकी। तो कैसे फिर अच्छा बनाओगे? क्योंकि फिर आप डर गए, बिकॉज देन यू हैव टू लर्न द मेथड, दैट सेम ओल्ड रॉट मेथड। यस, आपने स्टेप मार्क्स डाल दिए कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप लिखेगा। साउथ इंडियन टीचर इस मामले में बड़े काइयां होते हैं। काइयां मतलब कंजूस, दे डोंट गिव यू मार्क्स ओनली। So one of my friend who is an investment banker in Hong Kong, he told me this is the problem with India। जब हमारा बच्चा बाहर जाता है ना, उसको समझता ही नहीं है, उसको नए स्किल्स ही नहीं है उसके पास, तो हम स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग वेरी पुअर, very poor communication, very poor communication does not mean that you have to go and speak in English. English has nothing to do with communication skills. Basically you should be able to communicate what you are trying to say first of all. That is the most important thing।
वही चीज नहीं हो रही है। कितने बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा है बताओ, कितने बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है? द किड्स दीस डेज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इमर्स्ड इन मोबाइल, कंप्लीटली इमर्स्ड इन गेम वेम। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो गैप है ना, यही डेप्थ ट्रैप में फंसता जा रहा है। देखो जब तुम्हारे पास, सपोज राइट, व्हाट इज डेप्थ ट्रैप, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यू अर्न लेट्स से 40,000 रुपीज, फिर मार्केट में आया मोबाइल, विच वन? एप्पल। FOMO, which I told you last class. Earlier I told you FOMO will be created. So Apple will come up with an ad. ये नहीं खरीदा तो क्या खरीदा? 1,60,000 का फोन, 1,20,000 का फोन। तुम्हारी अर्निंग कितनी है? 40। उसमें तुम खर्चा तो करोगे। जरूर थोड़ी सिर्फ एप्पल ही कहना है, जूते भी अच्छे चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए, मूवीज भी जाना है, पार्टी भी जाना है, देयर ऑल्सो हैव टू स्पेंड। कोई पार्टी में फ्री में तो बुलाएगा नहीं तुमको। सो व्हाट यू विल डू? वहाँ भी खर्चा, वहाँ भी खर्चा, वहाँ भी खर्चा। तो यार आई एम अर्निंग 40,000 रुपीज, 10 आई एम मेकिंग सेविंग, लेट मी बाय एन एप्पल फोन, और 10,000 का EMI करा लूंगा। देन दैट विशियस साइकिल ऑफ EMI स्टार्ट्स। 10,000 के हिसाब से जैसे कि एक साल में उसको पे कर दूंगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो लगता है 15%, 14% जो भी है। तो तुमने EMI लिया, 30,000 तुम्हारा वैसे ही था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो यू विल, देन यू विल कम इनटू विशियस साइकिल ऑफ, फिर कोई मोटरसाइकिल का ऐड आ जाएगा कि यू डोंट बाय बुलेट, तुम्हारा तो जिंदगी में पृथ्वी पे रहना ही बेकार है। काइंड ऑफ मैसेज इज कन्वेड, नॉट डायरेक्टली, बट दिस इज व्हाट दे डू। व्हाट यू विल डू? 5 लाख का बाइक है, तुमने कहा यार 50,000 सैलरी है, बाइक ले लेता हूँ, 4-5 साल चलेगी, 15,000 का EMI कर लेते हैं, 10,000 का EMI कर लेते हैं। यू विल अगेन गो इनटू दैट डेब्ट ट्रैप। सो यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू डेब्ट ट्रैप। That is what going to happen, and that is what happening is. To come out of that debt trap, there's so many things which you can do. Best is get into good college if you are going for higher education. Get into good college, perform there also, get into good companies, at least make 2-3 lakh rupees per month as a salary. If you are making 2 or 2.5 lakh rupees per month as a starting salary, you are in top 1% of the Indian population. अब top 1% से आपको top 0.5% पहुंचने में it will hardly take 10 years. Hardly. You can reach much beyond that, right? When you have 2 lakh rupees, you will have a lot of saving also. क्योंकि जो बुलेट है या फोन है वो तुम्हारे लिए भी उतना ही कॉस्ट है। द पर्सन हु इज अर्निंग 40,000 and the person who is earning 2 lakh rupees per month, both will have to pay same cost for Apple. But that person, right, can buy that phone just by saving of 1 month. In your case, you'll not be able to buy it. Why? Because you have to take an EMI. So more and more people will see every business you see. Now you ask people that business are shrinking. It's not business is shrinking. Business कभी shrink नहीं होता, business तो बढ़ता है। बहुत सारे लोग आ गए उसमें। चौगम रोड पे there was 4 liquor shop, 28, 29. And then because of boom, now 2-3 has closed down because there is a, अभी बिजनेस में स्लो डाउन आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि टूरिज्म ओरिएंटेड है, इसीलिए तो क्लोज हो रही है शॉप। लेकिन अगर टूरिज्म बूम करता रहेगा तो और भी लोग दारू की दुकान खोले। तो वो काम विच एनीवन कैन डू इट, राइट, उसमें बहुत कंपटीशन होता है। कैसे? रेस्टोरेंट कोई भी खोल सकता है। क्या करना है आपको? कुक लाना है, बनवाना है। अगर आप अच्छे हैं तो चल जाएंगे, नहीं अच्छे हैं तो आप तो 4-6 महीना स्ट्रगल करेंगे। तो वो काम तो कोई भी कर सकता है, डोंट रिक्वायर स्किल अनलेस यू गो एंड मेक अ फूड। देन लिकर शॉप, कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट से पैसा उठाया, लोन उठाया, आपने दुकान खोल ली without doing any market research. That's a different story, some altogether. So anything which everyone can do will always have more competition. Anything which less people can do will have very less competition. For example, in case of this thing, data science, business analyst, data, artificial engineering, cyber security, ये जो नए कोर्सेज हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें कम कंपटीशन है। तो कोई, तो यहाँ पर हमेशा पैसे हमेशा बने रहेंगे ज्यादा, क्योंकि कम लोग हैं ना। एनीथिंग विच इज लेस विल हैव अ हायर वैल्यू। सोना इज लेस, हायर वैल्यू। डायमंड इज लेस, हायर वैल्यू।
पत्थर बहुत सारे, सो नो वैल्यू। इफ आई आस्क यू टू गिव मी लेट्स से 2 डायमंड्स एक महीने के अंदर, यू नॉट बी एबल टू, बट इफ आई टेल यू गिव मी इन 1 hour यू हैव टू गिव मी 100 पीसेस ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, यू विल बी गिविंग। अबंडेंट में है ना सब कुछ, अंडरस्टूड। तो ये डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट हमेशा चलेगा। हाँ, नहीं, क्वेश्चन अगेन ये है, जॉब है, तुम जाके ग्लास डोर पे देखो, जाके लिंक्डइन पे जाओ, देर आर जॉब्स। गोवा में इंडस्ट्री नहीं है, गोवा में तुमको जॉब कोई नहीं देगा, तुमको देगा तो हाईएस्ट सैलरी 50,000 है, अनलेस यू गो फॉर जेएस और वो थोड़ी ज़्यादा है वहाँ। नॉर्मली सिचुएशन में यू गेट हार्डली 50,000 मैक्सिमम। अगर एवरेज सैलरी गोवा में देखो तो 15,000 के आसपास है। यूपी का एवरेज सैलरी 20,000 है, बिकॉज इंडस्ट्रीज है। बिहार का कम है क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, तो जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है वहां पर सैलरी आपको उतना नहीं मिलेगा। फिर गोवा में तो सैलरी भूल जाओगे, तुमको 1 लाख कोई देगा, नोबडी विल गिव यू। 1 लाख का सैलरी नहीं देंगे यहाँ पर, बहुत रेयर चांसेस है कि 1 लाख देंगे तो 12 घंटे काम कराएंगे। सी अभी नहीं होगा, पूरा पूरा का पूरा एआई, एआई का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के पास ही रेडी नहीं है, तो बहुत दूर की बात है। गोवा वो तो बैंगलोर में बन रहा है, दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, बैंगलोर में बन रहा है, पुणे में हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है उस पर, नोएडा साइड में हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में, इन जगहों पे काम हो रहा है, हैदराबाद में काम हो रहा है। गोवा तो बहुत पीछे, अभी नहीं आएगा। अभी तो इंदौर में अभी होना चालू हुआ है, एक एआई की एक कंपनी है, अभी कुछ फंडिंग वंडिंग मिला है, तो इन जगहों पे काम हो रहा है। यहाँ नहीं, हाँ यहाँ तो एआई से रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगा। एआई से रिलेटेड जॉब, अच्छा जॉब जिसको कहते हैं टू वर्क विद एआई, नॉट, वो मुश्किल है। ये तो क्या हुआ कि कॉलेज ऑटोनोमस कर दिया, इसीलिए जो तुम पढ़ रही हो कि वहां पर हम लोग एआई है, 4 साल बाद यही बच्चा नौकरी ढूंढता नजर आएगा तुमको गोवा, वो होने वाला है। सो डोंट स्टार्ट समथिंग विच इज हैज नो ऑप्शन। और दूसरा क्या है कि अभी ऑटोनोमस कर दिया तो सीट बढ़ा दी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सीट आप कब बढ़ाते हो, जैसे मुंबई में कॉलेज है एनएमआईएमएस, वेरी गुड कॉलेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, गुजराती है, सीट बढ़ा दिया उन्होंने, 700 इंजीनियर आप निकाल रहे हो, कैसे होगा भाई, प्लेसमेंट कैसे होगा? तो एवरेज नीचे क्या, इक्फाई हैदराबाद 1000 बच्चा पढ़ रहा है एमबीए में, कैसे प्लेसमेंट करोगे सबका? आईएम जैसा कॉलेज कैन नॉट इंक्रीज मोर देन 450, वो भी 450 उन्होंने रो रो के, मतलब प्रेशर आया गवर्नमेंट का तब किया, लेकिन नहीं बढ़ाना हमको, यू कैन नॉट प्लेस देम, सिंपल, अंडरस्टैंड। तो वहां पर तो आईएम का इसीलिए वैल्यू है ना, डिमांड सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है उनकी, सप्लाई कम है। एआई इंजीनियर की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए उनको पैसा मिलेगा। तो तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो उसमें स्किल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कर रहे हो जो कोर्स का कुछ तो फ्यूचर होना चाहिए। हम्म हम्म प्राइवेट है, उनका सिर्फ एमबीए अच्छा है, सिर्फ एमबीए अच्छा है, उसमें भी एमबीए में एसआई भी, बहुत सारे लोग ना अभी सिर्फ एआई आ गया तो उसके बेसिस पे पैसा कमाने पे लगे हुए। जैसे अभी मैंने बोल दिया एआई का एक कोर्स कराना है, और तुमने वो कर लिया, राइट? क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है, तो तुमने वो कर लिया, लेकिन कॉलेज कैसा है, कितना है, क्या उसका इंडस्ट्री इंटरफेस कैसा है, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस कैसे हैं, कंपनीज कौन सी आ रही हैं, वो सब कुछ नहीं दिखता आदमी, सिर्फ क्या वर्ड देखा, एआई, तो पहुंच गया। है ना, यार तो सबका यही सिचुएशन है। तो इसीलिए अभी गोवा यूनिवर्सिटी, इनके कॉलेज ने, तुम्हारे कॉलेज ने एमबीए चालू कर रखा है, बच्चे जाते हैं एमबीए कर रहे हैं वहां पर, सिर्फ एमबीए करना है। हाँ, इंटर्नशिप तो बहुत दूर की बात है, इंटर्नशिप मतलब क्यों चालू किया वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे को तुम्हारे स्कूल के एक सर ने बोला कि सर आप बच्चों को बोलिए, कैसे बोलूं मैं यार,
मतलब मैं तो मेरे को खुद भी शर्म आती है। यू टेल मी कि यार, यू टेल देम द स्टूडेंट्स टू डू एमबीए फ्रॉम हियर। सी ऑनेस्टली, बीइंग इनटू एजुकेशन एंड वेयर आई प्रोपोगेट कि यार आप अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, सडनली बोलो कि नहीं नहीं यहाँ भी आप जा सकते हो, रॉन्ग। आई मीन, फिर भी मुझे वो लास्ट में वो क्या ऐड करना पड़ता है, से वेरी रॉन्ग। आई डोंट वांट टू डू इट, बट मेरे को कॉलेज में सेमिनार उस कंडीशन पे दिया गया था तुम्हारे कॉलेज में, रिमेंबर आई केम, कि आपको वो बोलना ही पड़ेगा लास्ट में, otherwise they don't give seminar. This is how they are doing it. Which is wrong. I mean, I felt so bad, उनका यार बच्चों को कैसे बोलूँगा। स्टैंड अगेन वही चीज मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे को आज भी, जैसे मैं दिसंबर में मैं था कि गोवा आधा मैं गोवा से शिफ्ट हो जाऊंगा, दिसंबर जनवरी के बाद, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस देयर आल्सो। एंड कल ही मेरे को फिर एक अच्छा डील मिल गया। और वो डील किस लिए मिला, तो मैं इंदौर में मैंने बात करी, इंदौर में आई क्वांटा जो इंदौर वाला है, उसने मेरे से कहा कि सर, तो कल वो पुणे आया था तो ही कॉल्ड मी कि सर, तो मैंने कहा यार मैं इंदौर शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, और मैं बेसिकली वैसे कॉलेज के साथ स्कूल के साथ टाई अप कर रहा हूँ काउंसलिंग वगैरह के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। तो कहता अरे सर आप एक काम करिए, इंदौर आ जाइए, आप इंदौर पूरा संभाल लीजिए, हम लोग 50-50 कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने कहा ठीक है, मैं आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कहता नहीं नहीं सर आप आ जाइए, बहुत पीछे पड़ा। तो मैंने कहा कि आप मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, तो हमारे फ़ोन पे ही बात हुआ है। कहता नहीं आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, पता भी किया है, मैं इंदौर में पढ़ाता था टाइम में और करियर लॉन्चर सब जगहों पे। तो कहता मैंने पता किया, बैकग्राउंड चेक किया है। तो उन्होंने कहा कि आप आके पढ़ाइए, काउंसलिंग सर हम लोग करेंगे, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल में जानता हूँ, आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सी, ये ऑफर आपको हर कोई नहीं देगा, right? ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई कुछ ना कुछ तो है। तो मुझे इस बेसिस पे ये सारी चीजें मिली। तो अगर आपका स्किल्स है तो आप कहीं भी फिट हो जाओगे। तो ये इंदौर, मेरे को तो लगा था कि यार इंदौर जाऊंगा, ठीक है, मुझे एक थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल तो रहेगा ही, जान पहचान कितनी भी हो, नोबडी, बट मुझे एक सामने से ऑफर आ गया। फिर आज सुबह मेरे को टाइम, जो वहाँ का टाइम भोपाल और इंदौर चलाता है उसको श्वेतांग मलिक, आई एम लखनऊ पास आउट। बिकॉज आई जस्ट स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड इन इंदौर कि यस मुझे दिसंबर के बाद है ना थोड़ा इंदौर आना है, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ करूँगा वहाँ पर ऐसे। मैंने ये नहीं बोला कि जॉब करूँगा। तो मेरे को श्वेतांग मलिक, हाँ, वो मेरे से कहता है अरे सुशील, हितेश हैज़ गिवन मी अ नंबर एंड इवन दीपक दीपक हैज़ गिवन मी अ नंबर। आई रिमेंबर कि श्वेतांग मलिक को मैं जानता हूँ बाय नेम। यस सर। कहता है इफ यू आर कमिंग हियर सो लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग, आई विल पे यू, let's say what is your expectation? I said for what? He said for a job. I said no sir, don't worry, I'm not looking for a job. He said no, tell me, I'll pay you 3 lakh rupees per month salary. अब दो लोगों को सिर्फ, मेरे नेटवर्क अच्छा था, मैंने दो लोगों को सिर्फ बोला, उन्होंने श्वेतांग मलिक को बोला कि अच्छा फैकल्टी है, आप उसको लेके आइए, 3 लाख रुपए उसको आप दे सकते हैं। सी दिस टू थिंग्स हैपेंड इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स दिस टू थिंग हैपेंड। अब शाम तक हो सकता है मुंबई से भी कोई कॉल कर दे, क्योंकि ये मार्केट में जल्दी फैल जाता है। What I'm trying to say here is, because you have a certain set of skills, people will pay for that. So you have to develop skills. Right? In college में नौकरी तब नहीं मिल रही है क्योंकि स्किल सेट नहीं डेवलप है एमबीए के बच्चों के, उनको पता भी नहीं है कि दुनिया के बाहर क्या है, नेटवर्किंग क्या है। तो इसीलिए तुमको बाहर जाना जरूरी है। मेक योर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच एवरीवन इन दिस रूम हैज टू लर्न। Go out, make your network strong. Meet people, take their number, go and meet people. Randomly किसी भी एजुकेशन एक्सपो में चले जाओ, किसी भी टेक एक्सपो में चले जाओ, अभी इतने सारे टेक एक्सपो होते हैं, किसी में भी चले जाओ, जाके सिर्फ स्पेक्टेटर बन के घूमते रहो, 4 लोगों से मिलो, उनका नंबर लो। मैं मुंबई में लास्ट ईयर आई वेंट टू, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड कमाल स्टडी, सॉरी स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्लोबल स्टडी करके एक ग्रुप है। सो आई वेंट देयर, का बैटरी जाने वाला, आई वेंट देयर। और मैं एक नॉर्मली, हम लोग चाय पीने के निकले और उनका भी कॉन्फ्रेंस चला तो वो भी निकले। तो एक कमाल करके एक बंदा था, मैंने उससे पूछा कि आपका स्टडी ग्रुप है, तो उसने कहा हाँ स्टडी ग्रुप नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार गोवा में बच्चे हैं, तो मुझे आप बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप
कर सकते हैं, और अगर आईवी लीग अगर किसी को करवाना है तो क्या करेंगे। तो 3-4 दिन पहले उसका फ़ोन आया, तो मैं कहा ठीक है, मेरा ऐसा था नहीं कि मैं अभी जीआरई फीआरई पे कुछ फोकस करूं। तो उसने मेरे को 2-3 बार फ़ोन किया, फिर एक मेरा उससे जी मीट हुआ, फिर अभी कल फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आई एम वर्किंग विद सर्टेन यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने कहा एक मेरी स्टूडेंट है, उसको यूएस में जो यूके में जो टॉप 3 कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहिए, आप उसका रिक्वायरमेंट बता दीजिए, उसको जीआरई का प्रिपरेशन करना है, दैट आई हेल्प हर। आप उसका जो एप्लीकेशन है एसओपी वगैरह है तो सब करा। तो सिर्फ एक चाय पे आप मिले, में नंबर एक्सचेंज किया, उसने फिर रिमेम्बर किया कि आप थे, उसने मुझे कांटेक्ट किया, किस उसके जो ऑफिस का बंदा था उसने मुझे कांटेक्ट किया। ये सारी चीजें ना मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ तो ये आपकी सिर्फ नेटवर्किंग ही है जो आपको हेल्प कर रही है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट नेटवर्किंग एंड स्किल्स, तो फिर आपको डेवलप करनी है। तो जितना अच्छा है उतना। तो मुंबई होके आई, एक्सपीरियंस है शेयर। हाँ, ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। फिनिश्ड, दिस इज डन, दिस इज डन। Product of two distinct natural number which I told you. 23rd question, find the number of ways. ये भी easy है। Two distinct natural number ना, so I told you first find total number of factors, first half of 8 plus 1 9, 10 plus 1 minus 1, so 99 minus 1 is 98, 9 is the answer. Two distinct natural numbers, अगर वो distinct हट जाता तो इसमें जो आता फाइनल आंसर add 1, should have add 1 to it, 50. Next question is 23rd is easy, 24th, yes, look at question number 24th. So in 24th, what is given? Find the number of ways in which 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 10 can be written as a product of, two coprimes, right? Product of two coprime. Now focus on this. If I ask you in how many ways you can write 12 as a product of two coprime, you can write this as 1 and 12. 1 will always be coprime with anyone. Then I can write 2 and 6. No. Can I write 3 and 4? Yes. So 2 ways, right? Let's take some more number. Let's say 9. So 9 we can write as 1 and 9 only. Yes, because this is a perfect square. Let's take 20. So 20 is what? 1 and 20, and then 5 and 4, right? Can we write 2 and 10? No, because they're not coprime. These two has to be coprime, right? So no matter which number you take, if you want to write any number as a product of two coprime, one will be 1 and the number itself, and second is the one part which is made by 2 and one part which is made by 3 only in this case. So 1 will be what? 1 and the other number is 2 raised power 6 into 3 raised power 10, एक हो गया, और दूसरा 2 raised power 6 and 3 raised power 10. So only 2 ways you can write a number as a product of two coprime. See, if you, because this number is what, this into this, right? So suppose you say 2 raised power 6 into 3 raised to the power 10, right? Suppose you take one power and put it here. So it is what, 2 raised power 5 into 2 raised power 1 into 3 raised power 10. Are these two coprime? Is 2 raised power 5 and 2 into 3 raised power 10 coprime? Because 2 is the number which will cancel both, right? So they are not coprime. So coprime will only be formed when you have all power of 2 on one side and all power of 3 on one side. This and this individually they are coprime or not, right? Because 2 raised power 6 by 3 raised power 10, you cannot divide it because one is entirely made up of 2, another is entirely made up of 3. So only two pairs which will be formed where the numbers are product of coprime.
राइट। कोप्राइम में हमेशा 2 ही केस आएंगे। नेक्स्ट इज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। See the next one. So next question what you have, find the number of ways in which 2 cube into 3 raised power 4 into 5 raised power 6 into 7 raised to the power 6 can be written as a product of two coprimes. So one, एक तो होगा 1, right? One is 1 and other number is 2 cube into 3 raised power 4 into 5 raised power 6 into 7 raised power 6, right? Right. One number is this, right? The second number, so one pair is this. Second will be what? Where 2 cube and 3 raised power 4 into 5 raised power 6 into 7 raised to the power 8. This is also coprime or not? Then third will be what? Then 3 raised to the power 4 will make a pair with 2 cube into 5 raised power 6 into 7 raised to the power 8. Then next will be what? 5 raised to the power 6 and 3 raised power 4 into 2 cube into 7 raised to the power 8. And last will be what? 7 raised to the power 8 and 2 cube into 3 raised power 4 into 5 raised power 6. So 1, 2, 3, 4, 5. Any other number? Coming, वो कर सकते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, correct. Now we can have 2 cube and 3 raised power 4 and 5 raised power 6 into 7 raised to the power 8. This is also coprime. Yes. Then I can also club 2 cube into 5 raised power 6 and 3 raised power 4 into 7 raised power 8. Yes. Then I can also club 2 cube into 7 raised to the power 8 and 3 raised power 4 into 5 raised power 6. So now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 more numbers will be there. Which more numbers will be there? 3 raised power 4 किस किस के साथ बना सकता है, right? One is 3 raised to the power 4 which I already taken. Now 3 raised to the power 4 and don't take 2 cube, it's already taken. 5 raised power 6 and this is 2 cube into 7 raised to the power 8, right? Then 3 raised power 4 into 7 raised to the power 8 and 2 cube into 5 raised power 6. Yes. Then more 5 raised to the power 6. Don't take 2 and 3, already ले चुके हम लोग 2, 3 वाला. Then 7 raised to the power 8 and then with what? 2 cube into 3 raised power 4. तो दो का पेयर लिया, अब 3 का पेयर लेना पड़ेगा. 3 का मीन्स you have 2 cube into 3 raised power 4 into 5 raised power 6 and 7 raised to the power 8. Then you can have 2 cube into 3 raised power 4 into 7 raised to the power 8 into 5 raised power 6. ये भी हो जाएगा. Then you can make 3 raised power 4 into 5 raised power 6 into 7 raised power 8 and 2 cube. So to be done. Then you can have, so you can have, see 7, 8, 5, so you can write 3 raised power 4 and this is 2 cube to 3 raised power 4 into, sorry, 5 raised to the power 6 into 7 raised power 8. This is also there. 4 ka pair already you made it. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Check we missed something. जो आपने कौन सी ये which one? ये ना, ये अलग होगा ना. अच्छा हाँ ये सॉरी
सेम ही हो गया. ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो सेम. शॉर्टकट बना तो सकते हैं. ये भी. बेसिकली प्लेस ही चेंज कर रहे हैं वो लोग. पीएनसी से ही होगा. By club all four together. No. Vector, because arrangement does not matter. Whether you write this into this into this into this or this into this. So only one case here. This case, because the arrangement does not matter. Then we have 3 here and 1 here. इसमें 4 बनेंगे, राइट? जैसे ये A, B, C and then D. इसमें 4 cases. 1, 2, 3, 4. And you have AB and then you have CD. So here possible combination will be what? ACAD and BCBD. इसके possible combination is ACAD, BC, BC. कितना बचा? नहीं, AC and this is BD, right? BC and BD. BC and BD, right? ACAD, AC, A और C गया, and BD, which is there. Then you have AD and BC. Okay, so 3, right? 1, 2, 3. और कुछ बनेगा क्या? नहीं. And then we have 3. So you have A, B, C, D. इसका एक केस and then second case में if I write B, C, D and then write A, and third case is A उधर गया, A, C, D, B, and fourth case will also be there, right? When we have C here. So 4 cases here, these are 4 cases. And this is basically same as this, right? This I can eliminate. So 1, 2, 3, 4, and this is 5. 6, 7, 8, 8. See, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6, 7, and 8. Check, 8 is the option. पार्टीशन वाला लगेगा इसमें. हाँ, 80 आंसर होगा. 16 तो बनेगा ही नहीं कभी. नेक्स्ट इज सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, 4 into 3 cube.
Sum of factors 26th one. Two raised to the power 4 into 3 cube. What you can do? 2 raised to the power 4 plus 1 minus 1, 3 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 and 2 raised to the power 5, 32 minus 1, 31. 3 raised to the power 4, 81 minus 1 is 80 divided by 2 into 1. One two four zero. Sum of factors you can find out for 437. What is prime factorization of 437? Is it divisible by 2? No. Divisible by 3. You always have to check the divisibility with prime numbers. Divisible by 5? No. 7 you have to check. 7, 6 are no. Right? 11, 13. No. 17. Last digit should be multiplied with 5. No. 23. Divisible by 23. 23 का square by 29, right? So आगे नहीं check करना है तुमको. Okay, chalo I'll teach you this method, right? How to identify a number as a prime or not. So this number which we have is 437. What is 437? You have to tell me that this lie between which two perfect square? What is 22 square 484, right? 21 square 441. So less than 21 square and greater than 20 square, right? Take out all the prime numbers less than 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 19, right? If this number is divisible by any of the prime number up to 19, then it is not a prime. Otherwise it is a prime. Divisible by 2, 3, 5 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी. 7 से भी नहीं हो रहा, 11 यहाँ तक तो सब इजी है. 13, 17 and 19 से you have to check. Not divisible by 13 also. 13 3 is 39. Then 4 47 जाता नहीं है. फिर 17 से 17 2 जा 34. 9 बचता है 97. 17 के उसमें नहीं आता. फिर check with 19. If it is not, then number is a prime number. 437 is prime. And prime number has how many factors? Number of factors are 2, which is 1 and 437. And what is the, if there is a prime factor, what is the sum of factors? एक और ऐड करना उसमें, एक नंबर 1, एक नंबर 437. So add both of them, 438. Look at the option. फोर 37 प्राइम ही है ना. 4 है 19 से. चलो चेक करते हैं 437. 19 2 सा 37. 19 3 हो रहा है. 437 can be written as 19 into 23. Number of factors will be 4, but sum of factors will be what? A is what?
19 raised to the power 1 plus 1 minus 1, 23 raised to the power 1 plus 1 minus 1 divided by 18 into 22. Now 19 square minus 1, 23 square minus 1 divided by 18 into 22. What is 19 square minus 1? या इसको a square minus b square लगा दो तो 19 plus 1 is 20, 19 minus 1 is 18, ये 22 into 24 divided by कितना था a square minus b square is a plus b into a minus b. So 19 square minus 1 square is 19 plus 1, 19 minus 1. 480. Next is, okay, perfect number बताना भूल गया था मैं तुमको, याद रखो. What is a perfect number? Right? What is a perfect number? So if sum of all factors except the number itself is equal to number, then it is called a perfect number. Suppose 6. What are the factors of 6? 1, 2, 3 and 6. So remove this number because 6 is the number. What is the sum of all this which is equal to number itself? It's called, right? Now the next question which we have is, if n is a perfect square, then the sum of all factors of n is equal to how much? Right? Sum of all factors of n is equal to how much? So ये perfect है, right? ये perfect number है. इसका sum of factors क्या होगा? Twice of it or not? So sum of factors, this is 6, right? इसके sum of factors is 12. So if there is any perfect number, the sum of factors of that perfect number is twice of the number. ऐसे 6 के सारे factors का add करो 12 आता है, which is double of 6. So it is twice of n. Check, we have twice of n as the option. Here, only perfect number. 6 is one perfect number. कुछ नहीं, उसके लिए नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तुम्हें, वो तरीका उसका याद रखने पड़ते हैं. 6 इज वन ऑफ देम, बहुत सारे हैं. सिक्स तो मुझे याद है, बाकी फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर्स. बट you don't have to remember, when questions will not be based on this, but this is a condition you have to remember, that perfect number and then sum of all factors of perfect number is twice the number always. हाँ, will always be. वो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब भी किसके बराबर है? n के बराबर. ये भी n के बराबर है. इन दोनों को ऐड करोगे 2n ही आने वाला है. Which one? Next one. 28th one you try.